Let's discuss the classwork of email chapter, that is chapter number 11. You all know what is the format of email. First is from, to, CC, BCC, then subject, then attachment, dear sir, then you have to start with your main content and then the salutation. So one by one we are going to discuss what email you have to write and then what can be the content. Question number 1. You are Mr. Pradeep Kumar, General Manager, Surbi Furnishings. You provide furniture and other furnishings to large businesses. Write a mail to Mr. Naveen Bansal, Proprietor, Chelsea, chain of restaurants offering your latest range of products at a discounted price in about 150 to 200 words. So, all the necessary ingredients to write the email is mentioned in the question. किसको लिखना है ईमेल आपको? मिस्टर नवीन बांसल को. कौन लिख रहा है ईमेल? प्रदीप कुमार. Who is Pradeep Kumar? General Manager. Which company? Surbi Furnishings. What is the content of the email? What is the subject of the email? Pradeep Kumar is basically apprising Naveen Bansal about all the offerings in his company Surbi Furnishings. So from में आएगा प्रदीप कुमार, to में आएगा नवीन बंसल, CC में कुछ नहीं, BCC में कुछ नहीं, सब्जेक्ट में आएगा डिस्काउंट ऑन न्यू रेंज ऑफ फर्नीचर, अटैचमेंट में कुछ नहीं. You will start your email by dear sir, respected Mr. Bansal or dearest Mr. Bansal, whatever you want to write. Since it's an semi formal mail, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो. Then you have to first state what is Surbi Furnishings. So Surbi Furnishings is a leading furniture manufacturing company in the state of Gujarat since 1991, and we specialized in furniture and furnishings. Then you have to mention all the necessary discount details, that discount किसके ऊपर है, कितना discount है, pricing लिखना है, that is up to you. Next, whenever you write about discount, you need to quote when is the discount available or till when is the discount available or the offer available. Next is question number 2. Write a mail to Mr. Santosh Desai responding to his query about the availability of cosmetics and toiletries in your manufacturing unit Shimmer and Shine. You are Manohar Singh, marketing head of the company. मेल किसको लिखना है आपको? संतोष देसाई को. लिखने वाला कौन है? मनोहर सिंह. किसके बारे में लिखना है? मिस्टर देसाई ने आपसे थोड़े समय पहले आपकी कंपनी में अवेलेबिलिटी पूछी थी अबाउट कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज. सो अब आप वहाँ पर उनको रिप्लाई देने वाले हो. सो फर्स्ट पैराग्राफ में आप एक छोटा सा रेफरेंस नोट लिखोगे दैट दिस ईमेल इज इन रेफरेंस टू योर ईमेल डेटेड डैश wherein you had asked for the availability of certain cosmetics. We feel happy and elated to share that all the cosmetics you had inquired are duly available with us. फिर आप एक छोटा सा टेबल बनाओगे, क्वांटिटीज उन्होंने बताई होंगी तो आप लिख दोगे, नहीं तो आप प्राइसिंग के साथ में उसको मेंशन करोगे. Next, write a mail to Miss Shikha Sharma reminding her of a business contract you have sent to her regarding providing infrastructure maintenance services to her company Global Solutions. You are Mr. Sanjay Johari, business head of Bloomsbury Infrastructures. आपको ईमेल लिखना है शिखा शर्मा को. आप कौन हो? संजय जौहरी. आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस कंपनी के हेड हो जो बड़ी बड़ी कंपनीज में मेंटेनेंस का काम करती हैं. आपने शिखा शर्मा के साथ में कोई मीटिंग करी होंगी और एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहा होगा, बट उन्होंने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके आपको भेजा नहीं है. अनटिल एंड अनलेस हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आप आगे नहीं बढ़ सकते. आपको शिखा शर्मा को रिमाइंड करना है दैट प्लीज सेंड अस द साइन कॉन्ट्रैक्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट अप विद द सर्विसेज ASAP. देन क्वेश्चन नंबर 4. यू आर अमर सिंह, टीम लीड इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ सेल्युलर टेलीकम्युनिकेशंस. Write a mail to all members of your team asking them to attend a meeting after 2 days, seeking their suggestions on ways and means to speed up the implementation of the project of improving connectivity in XYZ areas in the city. आप कौन हो? अमर सिंह.
आप एक कंपनी में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट में हो, आपको अपनी टीम को एक मेल लिखकर एक मीटिंग के लिए इनवाइट करना है। तो जब भी आप कोई मीटिंग के लिए किसी को इनवाइट करते हो, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो? यू नीड टू टेल देम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन इज द डेट ऑफ द मीटिंग, नेक्स्ट इज द time of the meeting, third is the venue of the meeting, and the fourth most important thing is the agenda, the purpose, the intention behind calling the meeting. तो ये चारों चीज़ें आप लिखोगे. Since it is a internal mail, आप अपना नाम लिखोगे अमर सिंह. You are not going to mention your phone number or any other details. So this is how you will write all the classworks of your email. Please remember, emails have to be crisp. आप जितना छोटा email लिखोगे, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और छोटा होगा, उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. If you go on writing lengthy mails, nobody is going to read it. Nobody is interested in reading a mail which is bulky. Remember, you're writing a mail, you're not writing a report. So it has to be most informative and accurate. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.